Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshita Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So today, very special day, it's the anniversary of the day in which Srila Prabhupada arrived in the USA. तो आज बहुत विशेष दिन है। आज वो दिन है जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। So we'll spend the class recounting some of Srila Prabhupada's pastimes and the difficulties and the obstacles and the challenges he faced in going to the West and establishing Krishna consciousness. तो आज की कक्षा में हम श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर प्रभुपाद जी के जो दिव्य पास्टाइम्स हैं उनमें जो प्रभुपाद जी को क्या क्या कठिनाई हुआ, प्रभुपाद जी को क्या क्या करना पड़ा और प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचे तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। So Srila Prabhupada was reluctant to change his ashram. He was always thinking that he would make money and give money to his spiritual master. तो श्रील प्रभुपाद जी अपने आश्रम को परिवर्तन करने में इतना इच्छुक नहीं थे और वो चाहते थे कि वो धन कमाएं और अपने गुरु महाराज को धन देकर सेवा करें। But then he saw his business fail, and he saw also the family members no longer had the same kind of respect for him. और परंतु उनका जो व्यापार था वो ठीक से नहीं चला और उन्होंने ये भी देखा कि उनके परिवारजन जो हैं वो भी उनके लिए उचित आदर नहीं रखते। So he understood it was time for him to make some change, and he left home and went to live in Vrindavan. तो श्रील प्रभुपाद जी ने समझा कि अब उनको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने घर को त्यागा और वृंदावन पहुंचे। At this point, he had not yet taken sannyas. इस समय तक श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास नहीं लिया था। So he was doing service in different temples for different god brothers. Sometimes he was engaged in editorial work. तो श्रील प्रभुपाद जी अलग-अलग मंदिरों में अलग-अलग गुरु भाइयों के लिए कुछ सेवा करते थे, कुछ लेखन का सेवा भी करते थे। But he was eager to begin his own preaching work. श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनका अपना प्रचार कार्य शुरू हो। It was 1944 he first printed the Back to Godhead magazine. 1944 में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापा। So that was a very basic magazine. It was just simply a newspaper, a sheet of paper with some of his articles. तो बहुत ही साधारण और सिंपल सा वो मैगजीन था, एक अखबार के कागज की तरह कागज के रूप में वो पत्र था। He'd be writing articles. Sometimes his articles were published by his godbrothers in their publications. तो प्रभुपाद जी कुछ आर्टिकल लिखते थे, उनके गुरु भाई उसको कभी-कभी छापते थे अपने किताबों में। Then someone suggested to him that instead of writing articles and just having a newspaper, why don't you publish a book? तो किसी ने श्रील प्रभुपाद जी को सुझाव दिया कि इस तरह के छोटे आर्टिकल्स या अखबार पे कागज छापने की बजाय आप किताबें क्यों नहीं छापते? So Srila Prabhupada then began his Bhagavad purports and the verse by verse translation of Srimad Bhagavatam. तब श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का अनुवाद लिखना शुरू किया। Very ambitious, because
Prabhupada didn't have money and he didn't have followers, he didn't have supporters behind him. ये बहुत बड़ा कार्य था क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के पास ना तो धन था ना ही उनको कोई मदद करने वाला था। But at the same time he wanted to publish many volumes of Srimad Bhagavatam. लेकिन इसके बाद भी श्रील प्रभुपाद जी कई खंडों में श्रीमद् भागवतम को छापना चाहते थे। It was at that time he came in contact with Srimati Murari ji, who was the chairman of the Sindhya Shipping Company. She was from the Pushti mark and a follower of Bhavacharya, so she liked Srimad Bhagavatam. तो इस समय श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती महाराज जी से मिले जो कि इंडिया शिप कंपनी की मालकिन थी और जो पुष्टि मार्ग से जुड़ी थी, बल्लभाचार्य जी को फॉलो करते थे और श्रीमद् भागवतम को पसंद करते थे। So she donated Srila Prabhupada money to help him in publishing that first canto of Srimad Bhagavatam. तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को छापने के लिए धनराशि देकर मदद किया। The first canto was in 3 volumes. और पहला स्कंद 3 खंडों में था। So Srila Prabhupada had been having dreams and his spiritual master was appearing to him and telling him that he should actually take sannyas. तो श्रील प्रभुपाद जी को सपनों में उनके गुरु महाराज आते थे और वो उनको बोलते थे कि आपको संन्यास लेना चाहिए। And he confirmed with his god brother Keshava Maharaj, and Keshava Maharaj agreed to initiate him into the sannyas ashram. और श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा अपने गुरु भाई केशव महाराज से किया और केशव महाराज ने स्वीकार किया कि वो उनको संन्यास देंगे। So at this point, Srila Prabhupada was already over 60 years of age. इस समय श्रील प्रभुपाद जी 60 साल के हो चुके थे। And another man took sannyas with him the same day. That other man was much older than Srila Prabhupada. तो एक और भक्त ने उस दिन श्रील प्रभुपाद जी के साथ संन्यास लिया जो कि श्रील प्रभुपाद जी से उम्र में बहुत बड़े थे। But after taking sannyas, he had an unfortunate experience. He was gored by a bull in Vrindavan and he was injured for quite a while. तो लेकिन संन्यास लेने के बाद श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक दुर्घटना हुआ। एक बैल ने उनके ऊपर अटैक किया, श्रील प्रभुपाद जी को चोट लगा। It was a challenge to him. Nobody was there to take care of him. Nobody was there to look after him. He was all alone. तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए बड़ा कठिनाई वाला समय था। कोई भी नहीं था श्रील प्रभुपाद जी को देखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी अकेले थे। Still, he persevered, and he went on and he tried to establish some preaching in Jhansi. और श्रील प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार झांसी में कुछ प्रचार कार्य को स्थापित करने का प्रयास किया। His lectures were attracting some public interest. People were taking some interest in him and starting to come, and Prabhupada was negotiating to acquire a very nice building there in Jhansi. तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन लोगों को अच्छे लगने लग रहे थे। कुछ लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते थे और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे अच्छा बिल्डिंग लेना चाहते थे। But he was not successful. The building was taken by a lady who had acquaintances with very prominent politicians. So Srila Prabhupada had to give up all his attempts there in Jhansi. तो परंतु श्रील प्रभुपाद जी इस योजना में सफल नहीं हुए क्योंकि एक माता जी जिनका की पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा संबंध था, उन्होंने उस बिल्डिंग को लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में अपने प्रचार कार्य को बंद किया। And then Prabhupada, somehow he met one man, one Agrawal, who had a businessman, and Prabhupada was talking to him, and Mr. Agrawal, I think he was in Mathura, and he said that he had a son who was living in America. So Srila Prabhupada told him, ask your son to sponsor me so I can come to America. तो इसके बाद मथुरा के एक व्यापारी अग्रवाल जी श्रील प्रभुपाद जी से मिले और जिनका पुत्र अमेरिका में रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे आग्रह किया कि अपने पुत्र को कहिए कि मुझे अमेरिका आने के लिए स्पॉन्सर करें। So Srila Prabhupada never thought anything would come of it,
But sometime later, Mr. Agarwal told him that my son has sent a sponsorship for you to go to America. तो प्रभुपाद जी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वहाँ से कुछ आएगा, लेकिन कुछ समय बाद अग्रवाल जी श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि उनके पुत्र ने श्रील प्रभुपाद जी के लिए स्पॉन्सरशिप भेजा है। So then Prabhupada began seriously to plan how to get to America. तब श्रील प्रभुपाद जी योजना बनाने लगे कि कैसे अमेरिका जाया जाए। Not very easy in those days, 1965, 66. There were many formalities, many difficulties before you could get into America. तो उस समय 1965, 1967 में इतना आसान नहीं था। उस समय बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी अमेरिका जाने के लिए। And Prabhupada no money also, how to go there. So he went to see Srila Maharaj and he requested her, give me a passage on one of your ships. और श्रील प्रभुपाद जी के पास कोई धन भी नहीं था, तो अमेरिका कैसे जाएं? तो श्रील प्रभुपाद जी फिर श्रीमती महाराज जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि उनसे प्रार्थना किया कि अपने एक जहाज में उनको अमेरिका जाने के लिए स्थान दिए जाए। And she was reluctant. She thought, you're an old man, you're going to, why you want to go to America? No, it's not a good idea. Better you just stay in Vrindavan, you're old and you're going to leave the body sometime. Better you just stay in Vrindavan, you can leave the body peacefully in Vrindavan. परंतु श्रीमती महाराज जी को प्रभुपाद जी का जो प्रस्ताव है उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को काफी कहा कि आप अमेरिका मत जाइए, आप बहुत वृद्ध हैं, आपको इधर वृंदावन में ही रहना चाहिए, वृंदावन में रह के आपको अपने शरीर को त्यागना चाहिए, आप यही रहिए। But Prabhupada was insisting again and again. He requested her and he came to see her again and again. And finally she consented and she arranged for him to get on one of her ships to go there. परंतु श्रील प्रभुपाद जी अपनी प्रार्थना को बार बार श्रीमती महाराज जी से कह रहे थे, बार बार उनसे आके मिलते थे और इस तरह से एक दिन श्रीमती महाराज जी ने उन्होंने प्रभुपाद जी की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और एक शिप में उनको स्थान दिया। And then with great difficulty, Prabhupada also completed all the different government requirements so that he could actually make that journey. और फिर बड़ी कठिनाई के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने जो सरकारी नियमों के हिसाब से जरूरतें था उसको पूरा किया और फिर अपनी यात्रा के लिए तैयार हुए। And people were kept telling him, you know, other sadhus like that from other missions, he would tell them that I'm planning to go to America, and they would tell him, if you're going to go to USA, you will have to learn to use a knife and fork, because everyone in the West, they all eat with a knife and fork. तो श्रील प्रभुपाद जी जब दूसरे मिशन के कुछ लोगों को ऐसा चर्चा किए कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ प्रचार करने, तो उन्होंने बोला कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे चाकू, छुरा, वो सब चीजों से खाना सीखना होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही होता है सब। In other words, they're all meat eaters. They use two hands. If they use two hands to eat, it means they're meat eaters. और वहाँ पे सब लोग मांस भक्षण करने वाले हैं, वो दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, मांस भक्षण करते हैं। But Srila Prabhupada said, I'm not going there to learn from them. I'm going to teach them. परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं वहाँ पर उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ। And Srila Prabhupada was so convinced about this that he arranged for his books, which he printed, the first 3 volumes of Srimad Bhagavatam, he arranged for several crates of these books to be shipped on the same boat which he was traveling to America. परंतु श्रील प्रभुपाद जी अपनी योजना में बहुत पक्के थे और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जो 3 खंड छापे थे श्रीमद् भागवतम के, उसके कई क्रेट किताबें श्रील प्रभुपाद जी ने उसी जहाज में लोड करवाए जिसमें वो खुद जा रहे थे। So Srila Prabhupada got his passage on the Jaladuta and he went there to Calcutta, and at the pier at Calcutta, his son came, his youngest son, Vrindavan, came to see him off. तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारा तैयारी किया और जलदूत जहाज से जाने के लिए कलकत्ता पहुंचे। श्रील प्रभुपाद जी के साथ
उनके छोटे पुत्र वृंदावन के वहाँ से। As a sannyasi, he did not go home. He didn't go to see the family. Although he was in Calcutta, he didn't go to see them. But his youngest son did come to see him to say farewell to him. तो एक सन्यासी होने के नाते श्रील प्रभुपाद जी अपने घर पे नहीं गए, हालांकि वो कलकत्ता में ही थे, परंतु उनके सबसे छोटे पुत्र वृंदावन को वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी को देखने आए। So one of our devotees, they talked to Vrindavan, Prabhupada's youngest son. They talked to him recently, and they asked him, "What were you feeling as you watched your father go off to America on a boat like that, on his own? How did you feel about it?" तो अभी कुछ समय पहले एक हमारे भक्त ने वृंदावन जो श्रील प्रभुपाद जी के सबसे छोटे पुत्र, उनसे पूछा कि जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूत पे जा रहे थे अकेले, तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? And Vrindavan he said that I was proud of my father, that he was doing such a mission on his own with so much courage. और वृंदावन जी ने उत्तर दिया कि मुझे उस समय अपने पिताजी को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि श्रील प्रभु कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा मिशनरी कार्य करने जा रहे हैं। One time Srila Prabhupada was describing how when he was a young boy, he climbed up on the Victoria Memorial and he went to the very top, the very top part of the structure of Victoria Memorial. तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि जब वो युवा थे तो एक बार विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर चढ़े और श्रील प्रभुपाद जी उसके सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंच गए चढ़े। Victoria Memorial was a very beautiful big building which was constructed during the times of the British Raj, and it was meant that one day the Queen would come there and visit it. तो विक्टोरिया मेमोरियल एक बहुत सुंदर और ऊंचा बिल्डिंग जो कि अंग्रेजी शासन के समय बनाया गया था, जहाँ पे वहाँ पे रानी आकर उस खाने उसको देखा करती थी। So it's a very tall, impressive building. So a devotee, when he heard Prabhupada say this, he said, "Oh, Srila Prabhupada, you must have had a lot of courage to go all the way up to the top of that building." तो क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल काफी ऊंचा बिल्डिंग है, तो भक्तों ने बाद में श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी आपके पास बहुत साहस होगा, इतना ऊंचा बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ गए। And Srila Prabhupada said, "Yes." He said, "Didn't I go to America on my own with no money?" श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, क्या मैं अकेला अमेरिका नहीं गया बिना पैसों के? Could you imagine going to America, no money, you don't know anyone, and you're going to go to America to start a worldwide organization? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आप अमेरिका गए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई किसी को जानते नहीं हैं, और वहाँ पे एक विश्व स्तरीय संस्था की स्थापना करने जा रहे हैं? You really have to have a lot of guts. ये करने के लिए आपके अंदर बहुत साहस चाहिए। It's not an easy thing. I know myself traveling in foreign countries what it's like. तो महाराज कह रहे आसान नहीं, महाराज कह रहे मैं खुद जब अलग-अलग विदेशों में जाता हूँ तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि कैसा होगा। And especially going to Western countries, because in Western countries, old people are nothing. If you're young, okay, young people they rule, but old people, forget it. You're finished. तो महाराज कह रहे खास तौर से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें बूढ़े लोगों का कोई महत्व नहीं देता हूँ। तो अगर आप जवान हैं तब ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में आपको कोई पूछने वाला नहीं हो। So there's Srila Prabhupada in his 70s coming to America alone, no money, no contacts. What hope, what chance would we give him of success? तो इस 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी बिना किसी धन के, बिना किसी जान पहचान के वहाँ पे पहुँचे, तो उनका ये जो मिशन है वो सफल होगा, इसका कितना चांस था? Anyway, he got on the boat, and the captain was also a nice man, Captain Pandya, and he was very pleasant to Srila Prabhupada. Later on, before Prabhupada left the boat, Prabhupada was able to sell one set of books to the captain. तो श्रील प्रभुपाद जी जब फिर जहाज में गए और जो जहाज के कैप्टन थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफी श्रील प्रभुपाद जी को मदद किया, और जब श्रील प्रभुपाद जी अंत में उस कैप्टन को एक श्रीमद् भागवतम का सेट देने में भी सफल हुए। And the captain gave Srila Prabhupada $20 in payment for the books.
which Prabhupada said was spending money, a few hours spending money in US. तो कैप्टन ने श्रीला प्रभुपाद जी को $20 किताबों के बदले में दिए और श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये $20 कुछ ही समय कुछ ही घंटों में अमेरिका में ये खत्म हो जाएगा। In the course of being on the ship, Prabhupada celebrated Janmashtami, and during Janmashtami, Prabhupada cooked prasadam and distributed it to all the crew. तो जब श्रीला प्रभुपाद जमदूत में जा रहे थे तो उस समय जन्माष्टमी का समय आया। श्रीला प्रभुपाद जी ने जहाज में जन्माष्टमी मनाया। वहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने खुद कुकिंग किया जहाज में और सभी जो वहाँ के जहाज के मेंबर थे उन सबको बांटा। And it was on the ship, as the ship was crossing the Atlantic, there was some storms and Prabhupada experienced heart attack. और जब वो जहाज अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था उस समय काफी तूफान आया वहाँ पे और श्रीला प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक भी हुआ। But at that time then he had a dream, and in the dream he saw he was in a boat and Krishna was rowing the boat, taking him across. तो उस समय श्रीला प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक आया तो श्रीला प्रभुपाद जी को उस समय सपना आया कि वो एक नाव में है और भगवान श्री कृष्ण उस नाव को चला रहे हैं। So in this way, Srila Prabhupada was encouraged that he should continue with this mission. Unfortunately, the rest of the journey, the Atlantic was very calm, and the captain said actually he had never seen the Atlantic so calm. तो उन्होंने जब भगवान को उस नाव में देखा श्रीला प्रभुपाद जी को उससे बहुत प्रोत्साहन हुआ आगे बढ़ने के लिए और जो कैप्टन थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे क्योंकि अटलांटिक में फिर आगे और कोई तूफान नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा शांत अटलांटिक समुद्र उन्होंने कभी नहीं देखा। You know, to have to cross the Atlantic, to cross the ocean in a ship is not an easy thing. When there are storms, the ship is going up and down, and it's a very traumatic experience for people who are not sailors. तो एक समुद्री जहाज के लिए तूफान के समय उसमें यात्रा करना बहुत आसान नहीं है। वो जब बहुत तेज तूफान आता है, कभी ऊपर आता है, नीचे जाता है जहाज, और जो व्यक्ति इसको नहीं जानते उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। But Srila Prabhupada took that risk, and somehow he crossed the ocean and he came into the pier at Boston. और लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने ये सारे मुश्किलों को सहा और फिर श्रीला प्रभुपाद जी बॉस्टन में पहुंचे। And Prabhupada said he didn't know whether to go left or right. He had no idea where to go or what to do. और जब वो बॉस्टन पहुंचे तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मुझे अब दाएं मुड़ना है या बाएं, कुछ क्या करना है नहीं पता। But fortunately, this Agarwal, Mr. Agarwal in India, his son was in America, and his son had arranged a man to meet him off the ship and to bring him to the bus terminal and put him on a bus to go to the place where Mr. Agarwal was living. लेकिन सौभाग्य से वो अग्रवाल जी जो मथुरा के थे, उनके पुत्र ने ऐसा व्यवस्था किया था कि जब श्रीला प्रभुपाद जी जहाज से उतरेंगे तो उन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ पर भेजा था जो श्रीला प्रभुपाद जी को ऐसी बस में चढ़ाएंगे ताकि वो अग्रवाल जी के घर पहुँच जाएं। So the son of Mr. Agarwal, he settled in America, and he married an American woman, a Western woman. Sally Agarwal was her name. And she was very sociable and very kind, and she very much liked Srila Prabhupada. तो ये जो अग्रवाल जी के पुत्र थे वो काफी समय से अमेरिका में सेटल हो चुके थे और उन्होंने वहाँ एक अमेरिकन स्त्री से विवाह किया था जिनका नाम हुआ फिर शैली अग्रवाल। और ये शैली अग्रवाल माता जी काफी अच्छा था इनका स्वभाव, श्रीला प्रभुपाद जी को पसंद करते थे। They were living in a town called Butler in the state of Pennsylvania, and Srila Prabhupada came there to Butler, and they arranged for him to stay in the YMCA. They arranged that there was some kind of guest house there at the YMCA, and they got a room for Srila Prabhupada there. And then during the daytime, Prabhupada would come to the Agarwal's home, and Prabhupada ended up cooking for them when he would come to their home. तो ये जो अग्रवाल जी के पुत्र थे ये
बटलर में रहते थे, बटलर में वहाँ पे, और उन्होंने YMCA नाम के एक गेस्ट हाउस में श्रीला प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था किया। श्रीला प्रभुपाद जी दिन के समय अग्रवाल जी के इनके घर आ जाते थे और अंत में श्रीला प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग करना, सेवा करने लगे। Agarwal's, Agarwal had been living there in America for some time and developed a lot of bad habits, not vegetarian anymore and so on. But Srila Prabhupada came there and Srila Prabhupada would show them how to cook. And because of course Prabhupada's not going to eat their food, so Prabhupada personally cooked for himself, and they would also enjoy eating the food which Prabhupada was cooking. तो ये अग्रवाल जी के पुत्र थे, क्योंकि काफी समय से अमेरिका में रह रहे थे, तो उन्होंने कई बुरी आदतें अपना लिया था। वो भी शाकाहारी नहीं थे बल्कि मांस भक्षण करते थे। और श्रीला प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके घर में उनका बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे, इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने वहाँ पे खुद बनाना शुरू किया। और जब श्रीला प्रभुपाद जी बनाते थे तो जो प्रसाद प्रभुपाद जी बनाते थे वो लोग भी खाते थे और उनको अच्छा लगता था। Prabhupada had to accept that kind of austerity in the beginning in order to just get established in the Western world. श्रीला प्रभुपाद जी को शुरुआती दिनों में ये तपस्या सहनी पड़ी ताकि वो कृष्ण भावना में इनको स्थापित कर पाएं। So the Agarwals arranged a few programs that Srila Prabhupada could speak, and they also had a newspaper reporter come and interview him, and they had an article about Srila Prabhupada coming from India to Butler and staying there. And so they did some nice things for Prabhupada, but of course nothing really substantial. And so Prabhupada decided it was after a short stay in Butler that he would move up to New York. तो जो ये अग्रवाल परिवार था, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी का मदद करने का प्रयास किया और इन्होंने प्रभुपाद जी के लिए कुछ कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए, जिसमें कुछ लोगों को बुलाया। उन्होंने न्यूज़ में भी श्रीला प्रभुपाद जी की भारत से सन्यासी आए हैं बटलर में, ऐसा खबर दिया ताकि लोग उसको जान पाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं था जिससे कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो सके। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने फिर निर्णय किया कि वो बटलर से न्यूयॉर्क आएंगे। And in New York, he had a contact, someone he'd never met before. He didn't know the person, but somehow he'd been given a contact that there was someone called Dr. Mishra. And this Dr. Mishra has a yoga studio. He's a yoga teacher, and he has a yoga studio, and he also has his own yoga retreat. तो जब श्रीला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे तो वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिनको वो पहले कभी मिले नहीं थे, और उनका नाम था डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा जी का अपना वो योगा के टीचर थे और उनका अपना एक योगा सेंटर था। So Dr. Mishra had become quite well established financially. He had some property there in New York, and he was able to provide one room for Srila Prabhupada to stay in. तो जो मिश्रा जी थे वो काफी समय से क्योंकि अमेरिका में रह रहे थे, उन्होंने अपना आर्थिक स्थिति उनका काफी अच्छा था, उनका अपना वहाँ पर एक बिल्डिंग था जिसमें श्रीला प्रभुपाद जी को उन्होंने रहने के लिए कमरा दिया। And Dr. Mishra had his own students, yoga students, Westerns, Americans, young Americans, and they were learning yoga from him. And Srila Prabhupada would come for their meetings, and Prabhupada would also like to try to preach to them. But Dr. Mishra didn't like him to preach. तो डॉक्टर मिश्रा का अपना एक सेंटर था और डॉक्टर मिश्रा के अपने शिष्य भी थे। वो लोग डॉक्टर मिश्रा से, वो अमेरिकन लोग थे, युवा अमेरिकन लोग, ये सब आकर डॉक्टर मिश्रा से योगा सीखते थे। और श्रीला प्रभुपाद जी भी उनकी मीटिंग्स में जाने लगे और श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ पे उनको प्रचार करना चाहते थे, जो भी डॉक्टर मिश्रा को अच्छा नहीं लगता था। Prabhupada would say to Dr. Mishra, "Your name is Mishra. Chaitanya Mahaprabhu's father was Jagannath Mishra. You are in that same family from Lord Chaitanya Mahaprabhu. You should help me to spread this message of Chaitanya Mahaprabhu." तो श्रीला प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्रा से कहा करते थे कि आप मिश्रा हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्रा उनका नाम, तो आप चैतन्य महाप्रभु के परिवार से ही हैं, तो इसलिए आप
आपको मदद करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को यहाँ पर फैलाने में। Very interesting. I was just in Nasik a few days ago, and in Nasik they wanted to begin a school, and they were fortunate. They met this one Bengali man whose name was Day, and so they told him, Prabhupada's also Day, and they found out that actually the Gotra is the same. And so they were very happy, they liked very much, and they agreed to give this land so that the devotees could begin a school there. तो महाराज बता रहे कि अभी वो नासिक से आ रहे हैं और नासिक में वो वहाँ पे एक स्कूल खोलना चाहते थे, तो वो एक बंगाली व्यक्ति से मिले और जब मिले तो पता चला उनका नाम था मिस्टर डे, और उन्होंने उनको बताया कि आप हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी इसी परिवार से, डे परिवार से, उनका गोत्र भी मिलता था। तो वो आदमी बहुत प्रभावित हो गया कि मैं प्रभुपाद जी और उन्होंने की उससे, और उन्होंने वो जमीन दे दिया वहाँ पे स्कूल खोलने के। So Srila Prabhupada was not encouraged to give lectures to the students, but Dr. Mishra did like him to sing some bhajans for them. He had a harmonium there, and Prabhupada played the harmonium and would sing some of the Bengali songs for the students. तो डॉक्टर मिश्रा श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को प्रवचन दें ऐसा नहीं चाहते थे, परंतु वो श्रील प्रभुपाद जी को मौका देते थे वहाँ पे कीर्तन करने का। तो उनके पास एक हारमोनियम था और श्रील प्रभुपाद जी वो हारमोनियम बजाते और कुछ बंगाली भजन गाते उनके लिए। And so while he was staying there in New York at that time, the room which he was in was broken into, and his tape recorder, which he'd been using to record articles and lectures, was stolen, and even his manuscript, which he'd done for the Bhagavad Gita, was also stolen. तो श्रील प्रभुपाद जी जब इस कमरे में रहते थे तो एक दिन उनके कमरे में चोरी हुआ और उनका टेप रिकॉर्डर जिसमें कि वो कई सारे आर्टिकल को रिकॉर्ड करते थे और उनका जो भगवद गीता का लिखा हुआ भी जो लिपि था वो सारा चोरी हो गया। But Prabhupada was not discouraged. Instead, somebody told him that, Swamiji, you're here in the uptown of New York. In the uptown of New York, you have people like Krishnamurti living, and he's in a nice apartment with all French furniture and lots of old ladies there who are supporting him. But better if you go down to the lower east side of New York, where the young people are, and where there's a whole new culture appearing. A lot of young people who are revolting against the materialistic way of life, and they're looking for some alternative. And if you go there, you could be more successful in your mission. तो श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में अप टाउन में रहते थे जहाँ पे कृष्ण मूर्ति जैसे व्यक्ति भी रहते थे और उनके पास एक बड़ा घर था जिसमें कई सारा अच्छा फर्नीचर, अच्छे कमरे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने ये सुझाव भी दिया कि आपको ईस्टर्न न्यूयॉर्क साइड में जाना चाहिए जहाँ पे युवा लोग हैं, और ये युवा लोग जो है अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा सफल होने का कुछ आपका चांस हो सकता है। You should understand at that time the US was involved in war with Vietnam, and they were drafting all the young people to join the military and sending them off to Vietnam to fight. And of course most of the young people didn't want to go. तो आपको पता होगा कि उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा था और अमेरिकन सरकार जो चाहती थी कि ज़्यादातर सभी युवा उनको मिलिट्री में भर्ती किया जाए और उनको वियतनाम युद्ध करने जाया जाए, लेकिन ये युवा लोग अमेरिकन लोग नहीं चाहते थे जाना। So it was an age of protest, and there were a lot of protests, and young people everywhere were all revolting, and they were saying this has got to stop, this way of life, this civilization is hopeless, there's no future in it, we want to find some alternative.
तो उस समय क्योंकि इस तरह का वातावरण चल रहा था, हर जगह पे ऐसे नारेबाजी हो रहा था और ये युवा लोग जो है इसका काफी इसका प्रतिशोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई अच्छी सभ्यता नहीं है। So in their search for the solution, looking for truth, sometimes young people would also get into things like drugs, and you had the people called acid heads, and then also meths monsters, as Allen Ginsberg calls them. Meths is it's a liquid which people drink to become intoxicated. तो महाराज बता रहे कि क्योंकि इस समय ऐसा सारा माहौल चल रहा था, बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं था, तो उस समय लोग शांति पाने के लिए कुछ लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू किया और कई प्रकार का ऐसा लिक्विड पान करना शुरू किया, जिससे इंटॉक्सिकेंट्स ऐसी चीजें उन्होंने लेना शुरू कर दिया। So Srila Prabhupada moved into this area, the Lower East Side in New York, which was very poor. And there was a lot of poverty there. There were people living in the streets and people all the time begging. There were many homeless people. It was a very unpleasant area. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उस समय लोअर ईस्ट साइड में वहाँ चले गए और जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गरीबी था, बहुत सारे लोग वहाँ गरीब थे, वो जब वो सब लोग भीख मांगते रहते थे, उनके पास अपने घर भी नहीं थे, तो काफी खराब स्थिति था वहाँ। But there were a lot of young people there, and they were looking for something new, something different. They were trying to search out some alternative lifestyle. लेकिन वहाँ पर बहुत सारे युवा लोग थे जो कि ये सब परिस्थिति के कारण कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ नया चाहते थे अपने जीवन में, कुछ नए तरह का जीवन शैली जीना चाहते थे। So somehow Prabhupada was walking in the street one day when a young American man approached him and asked him, "Are you from India?" तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी गली में चल रहे थे और एक युवा अमेरिकन व्यक्ति ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा, क्या आप भारत से हैं? And he saw Prabhupada in his saffron robes and the dhoti and everything. And this man who approached Prabhupada, he had personally been to India, so he could understand that Prabhupada was a holy man. तो उस व्यक्ति ने श्रीला प्रभुपाद जी को देखा क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने उस समय भगवा कपड़ा पहन रखा था, धोती पहन रखा था, तो ये व्यक्ति जो है क्योंकि भारत जा चुका था, तो वो समझ पाया कि श्रीला प्रभुपाद जी कोई एक धार्मिक व्यक्ति हैं। And so Prabhupada met the young man and said, yes, he's from India, and he explained what he was doing, how he'd come to introduce his teaching, the mission of Chaitanya Mahaprabhu. And the young man was very interested. The young man was actually a professor in university, and he'd been to visit India, and he was very interested to know more, and he came to meet Prabhupada, and he brought all of his friends. तो ये जो युवा व्यक्ति था, उनको श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि वो अमेरिका क्या करने आए हैं, कैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को वहाँ पर स्थापित करने के लिए आए हैं। और ये जो युवा अमेरिकन था, इसको प्रभुपाद जी की बातें अच्छी लगी, श्रीला प्रभुपाद जी से प्रभावित हुआ और फिर वो श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने आया। वो एक प्रोफेसर था, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और उसने अपने कई सारे और मित्रों को भी प्रभुपाद जी के पास लेकर आया। So somehow Srila Prabhupada had been living with different people, one place to another, and there were many difficulties. तो श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से अलग-अलग जगह पे कभी किसी के साथ, कभी कहीं पे रह रहे थे और इसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। At one point he was living with a couple. The husband was interested in Prabhupada's teaching, but the wife had no interest. एक बार श्रीला प्रभुपाद जी एक दंपति के साथ में रहते थे, तो जो पति थे वो श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन पत्नी को कोई रुचि नहीं था। If Prabhupada was to say anything to the young lady, to ask her, could you give me this or could you do that, she would look at him and say, do it yourself. तो अगर श्रीला प्रभुपाद जी कभी उस युवा माता जी को कुछ कहते थे कि क्या आप ये दे सकते हो या वो दे सकते हो, तो वो श्रीला प्रभुपाद जी की ओर देखती थी और कहती थी कि खुद करो। So Prabhupada saw it's not really
welcome there, and he found another place. He's staying with another young man, but this other young man turned out to be a drug addict, and he went crazy one day, and Prabhupada had to suddenly just leave, get out of that place. तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ से छोड़कर एक युवा व्यक्ति के साथ रहना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद प्रभुपाद जी को पता चला कि वो नशा करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी को अचानक से एक दिन उसको भी छोड़ना पड़ा। And it was then Mukunda, who is now Mukunda Goswami, he had somehow, he'd also met Prabhupada, and he arranged that they get this place 26 Second Avenue. तो उस समय इसी प्रकार से मुकुंद, जो कि बाद में मुकुंद गोस्वामी हुए, वो श्रील प्रभुपाद जी से भी मिले और उन्होंने ये व्यवस्था किया जो 26 Second Avenue को लेने के लिए। They rented just a small place today. We own it. The devotees purchased it, and we want to keep the building in the possession of the devotees. तो उन्होंने उस समय उसको किराए पे लिया और वो एक छोटा सा स्थान है, बाद में भक्तों ने शायद उसको खरीदा ताकि वो अपने पास रख पाएं। So that it was a shop front. It was a shop front, and the name of the shop was Matchless Gifts. तो वो एक दुकान था, दुकान का अगला हिस्सा था और उस दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। So when the devotees, when they saw the place, they thought, okay, yeah, we can change the name, we'll paint over this. But Srila Prabhupada said, no, keep that name. It's a nice name. तो वो जो उसका व्यवस्था कर रहे थे भक्त, उन्होंने कहा कि ये मैचलेस गिफ्ट है, पुराना यहाँ पे था दुकान, ये नाम है, इसको बदल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, यही नाम रहने दो। And then they found also that there was a room upstairs, a small apartment upstairs, and they rented that for Srila Prabhupada to stay in, and they used the shop front to have lectures. तो फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर ही ऊपर में एक छोटा कमरा भी उपलब्ध था किराए पे, तो वो उन्होंने किराए पे कमरा लिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए और जो दुकान था उसको प्रचार कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। So Prabhupada, of course, didn't have funds. Somehow, how he's getting by? Sometimes he could sell some books. Sometimes he would get some donation. श्रील प्रभुपाद जी के पास कोई धन तो नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कभी कुछ किताबों को बेचते थे और कभी श्रील प्रभुपाद जी कुछ दान में मिलता था। And when he would give his lectures like 3 times a week in the evenings, and people were coming. They started to come and attend. And after the lecture, Prabhupada would take an apple and cut it into pieces and distribute a piece of apple to everyone. And then he had some hat which he passed around, and he asked everyone, please contribute whatever you can as donation. तो श्रील प्रभुपाद जी जब ये प्रवचन किया करते थे तो शाम के समय प्रभुपाद जी हफ्ते में 3 बार प्रवचन करते थे और कई लोग वहाँ पे आते थे सुनने। और श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन के बाद एक सेब को काट के उसको सभी भक्त जो आते थे उसमें बांट देते थे और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी टोपी को वहाँ पे सबको भेजते थे और बोलते थे किसी को डोनेशन देना है तो उसमें कुछ डोनेशन डालते थे। So they met people. At that time there was a lot of interest about India. Nobody really knew much about India, but we had a lot of romantic ideas about it, that this is a place where everybody's enlightened and everybody's a great yogi. And Prabhupada began to attract attention. और उस समय लोगों के मन में ऐसा भावना था कि भारत के बारे में काफी इस तरह से विचार थे कि भारत में जो भी कोई है वो बहुत उच्च कोटि का है और काफी लोग से प्रभावित थे, योगी हैं वहाँ के लोग, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को काफी उन लोगों से आकर्षण मिल रहा था। And people began to come more and more, and Prabhupada would spend more and more time with them, and Prabhupada also began to cook for them. और फिर और ज़्यादा लोग आने लगे और श्रील प्रभुपाद जी उन लोगों को और ज़्यादा समय देने लगे और फिर श्रील प्रभुपाद जी उन लोगों के लिए कुकिंग भी करने लगे। And then he would train them up also how to cook. और श्रील प्रभुपाद जी फिर उनको भी प्रशिक्षित करते थे कि कैसे खाना बनाना है। In the beginning he was cooking himself, and gradually he trained up those people who were coming regular that they could also cook. तो पहले तो श्रील प्रभुपाद जी
खुद अकेले ही बुकिंग करते थे, लेकिन बाद में जो लोग वहाँ पे नियमित रूप से आने लगे, श्रील प्रभुपाद जी ने उनको भी लगाया इस सेवा में। And at the same time, Srila Prabhupada would continue his writing, and he would continue preaching every evening, giving classes. तो श्रील प्रभुपाद जी सबके साथ में अपना किताबों को लिखने का जो कार्य है वो लगातार करते रहे, और शाम का जो प्रवचन है वो भी लगातार चलता रहा। There were difficulties, there were objections. The neighbors, for example, they didn't like the noise. तो वहाँ पे काफी कठिनाई था, काफी तरह तरह का दिक्कतें आता था, जैसे कि वहाँ जो पड़ोसी थे वो शोर पसंद नहीं करते थे। You know, India is, I see in India, you know, you can make a lot of noise, nobody ever says anything. मैं देखता हूँ भारत में आप लोग खूब शोर मचा सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता। But if you go in the Western countries, you know, outside of India, even anywhere, even in Thailand, for example, Bangkok, you make a little noise and people get so upset. तो भारत में आप लोग कुछ भी आवाज कर सकते हैं, लेकिन बाहर विदेशों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ थाईलैंड में, बैंकॉक में, अगर वहाँ थोड़ा सा भी शोर होता है तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। In Hong Kong, our temple was on the 6th floor of an apartment building. तो हांगकांग में जो हमारा मंदिर है वो 6ठे स्तर पे है एक बिल्डिंग के। And so when we would have Mongol Aarti, when we first moved into the building, when we had Mongol Aarti, you know, all the neighbors were up in arms. Oh no, we can't have this every day. तो हमारे जब हमने नया उस बिल्डिंग में हम लोग गए, तो हमने जो मंगल आरती शुरू किया, तो सारे जो वहाँ के लोग थे वो आगे उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता है रोज। So many difficulties. So Prabhupada had that problem in America. He said in New York, he said outside there's so many trucks that make so much noise. We make a little ding, 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 and immediately they're knocking. Stop the noise, stop that noise. तो श्रील प्रभुपाद जी को ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो लोग प्रभुपाद जी को कहते थे कि बाहर ये ट्रक हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, और हम ये बहुत धीरे से डिंग 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 बजा रहे हैं, तो हमारे बजाते ही, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होता है। So Srila Prabhupada had to put up with all of these kind of things, and he had to put up all the kind of crazy people who would come also. तो श्रील प्रभुपाद जी को ये सब तरह की चीजों को सहना पड़ता था, और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत सारे ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को भी सहन करना पड़ता था जो वहाँ पे। Sometimes, you know, Prabhupada would be giving a lecture, and somebody, some young person in the crowd, in the audience, they would start to disturb and make a big disturbance. So Prabhupada would say, bring a plate of prasadam and give him prasadam. तो कई बार श्रील प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे होते थे, तो कुछ युवा, कई बार ऐसा कोई युवा व्यक्ति बीच में ही प्रवचन में बहुत अड़चन उत्पन्न करते थे, उसमें काफी परेशान करने लगते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक प्लेट लाओ प्रसाद का, इसको दो। And when the young man gets prasadam, he's eating prasadam, then he calms down, no more disturbance. It's a solution to all the problems. तो फिर, sorry, I missed it. It was a solution to all the problems by giving the man prasadam. तो प्रसाद जो है वो सभी दिक्कतों का एकमात्र सॉल्यूशन है। प्रसाद पाने के बाद वो नहीं करते। So Prabhupada was quickly adjusting to how things are in the Western countries, and he saw how ladies are also coming to Krishna consciousness. तो श्रील प्रभुपाद जी समझ रहे थे कि अमेरिका जैसे देश में किस तरह से कार्य होता है। प्रभुपाद जी अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर रहे थे। प्रभुपाद जी ये भी देख रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो भी कृष्ण भावनामृत में रुचि दिखा रही हैं। So that was quite a difference between how things were in India at the times of this Guru Maharaj, the Gaudiya Math. They didn't have too many young ladies coming there to Krishna consciousness. तो श्रील प्रभुपाद जी देख रहे थे कि उनके गुरु महाराज के समय से जब भारत में प्रचार करते थे उनके गुरु महाराज, तो उससे चीजें काफी भिन्न हैं। भारत में बहुत ज्यादा युवा महिलाएं इसमें इच्छुक नहीं थी। No, Gaudiya Math, maybe they have a few older widows or something who are there doing some seva in the temple, but no young ladies there. तो गौड़िया मठ में देखा जाता है कि कुछ वृद्ध विधवा औरतें वो वहाँ पे गौड़िया मठ में कुछ सेवा करती हैं, लेकिन युवा महिलाएं नहीं देखी जाती। But Prabhupada saw in the West how young men and women are mixed together everywhere, quite different from life in India.
And Prabhupada also allowed the women also to take part in Krishna consciousness. तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में देखा कि कैसे युवा वहाँ पे स्त्री पुरुष वो सब हर चीज में एक साथ में पाए जाते हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने उन युवा स्त्रियों को भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए And Prabhupada initiated them, accepted them as disciples, and of course they went on to do very, very valuable and important service. और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया, उनको दीक्षा दिया और बिल्कुल उन माताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा किया इस संस्थान में। And previously, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was asking his disciples to chant every day 64 rounds. And if they couldn't do 64 rounds, then they were considered to be fallen. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले अपने शिष्य को बोला करते थे कि 64 माला का जब रोज करना है हर एक शिष्य को, और अगर कोई 64 माला नहीं करता था तो उसको पतित माना जाता था। But when Srila Prabhupada told the devotees about this, then the devotees said immediately they couldn't chant so many rounds. So Prabhupada had said, well, 32 rounds, but still they thought that's too many. And then Prabhupada finally said, then you must do at least 16 rounds. तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही भक्ति सिद्धांत महाराज वाला बात 64 माला जप करना है करके जब इन लोगों को बोला तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये इतना जप हम नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने फिर 32 माला बोला, वो भी जब उनको बहुत ज्यादा लग रहा था तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 16 माला। At the same time, you should also engage in Krishna's service. The rest of the time, you must do service for Krishna. तो उसके साथ साथ बाकी सब समय में आपको भगवान का सेवा में नियुक्त होना चाहिए। One time Prabhupada came to the temple and he asked about one lady. He said, what service does she do? And the devotee said, oh Prabhupada, it takes her all day to chant Hare Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार मंदिर में आए और वहाँ पे एक माता जी थी तो पूछा कि ये क्या सेवा करते हैं, तो भक्तों ने बताया कि पूरा दिन ये हरे कृष्णा करते हैं। But Prabhupada said, no, that's not good. She can't do that. Everybody must do some service. She can chant, but she must also be engaged in some service. Everyone has to contribute some service. तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला नहीं ये बहुत अच्छा नहीं है, उनको कुछ सेवा भी करना चाहिए, उनको जप भी करना चाहिए और साथ में कुछ सेवा भी करना चाहिए, सभी भक्तों को कुछ सेवा में नियुक्त होना चाहिए। So Srila Prabhupada in this way began the Krishna consciousness movement, engaging everyone in their different activities. तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुरुआत किया, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी सेवा में लगाया। There was a young man who was a lawyer who was taking interest in the Krishna consciousness movement in the beginning, and Srila Prabhupada engaged him to register the society as ISKCON. तो एक युवा व्यक्ति थे जो कि वकील थे और वो कृष्ण भावनामृत में इंटरेस्ट रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि वो इस संस्था का पंजीकरण करें। So at that time, there were a very small number of people who were interested in Krishna consciousness, and they were just using a small rented shop front for the meetings. But Prabhupada wanted to incorporate international society for Krishna consciousness. तो उस समय यद्यपि बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही थोड़े से लोग वहाँ पे इच्छुक थे कृष्ण भावनामृत में, और एक छोटा सा दुकान के हिस्से में वो प्रचार का कार्य चलता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे इस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत। A lawyer was surprised that, international, you just have a little shop front and you have a few people, you're calling it international society. But Prabhupada knew what he was doing. He had his vision of the future. तो वो जो वकील था वो बड़ा आश्चर्यचकित था, उन्होंने बोला ये छोटा सा दुकान में आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य था उनको। लेकिन प्रभुपाद जी के पास अपना विजन था, प्रभुपाद जी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। And of course, somebody said, why Krishna consciousness? We should just call it God consciousness, it will be better. But Prabhupada said, no, we must give God His name. His name is Krishna. तो कुछ व्यक्ति ने ऐसा भी बोला कि इसको
कृष्ण भावना में संत क्यों बोलते हैं, कृष्ण क्यों भगवान बोलना चाहिए, गॉड बोलना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, भगवान को उनका नाम से पुकारना चाहिए और भगवान का नाम है कृष्ण। So it was Srila Prabhupada who really preached the glories of Krishna all over the world. तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने सचमुच में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान पूरे विश्व भर में किया। Many people went to the West and maybe they did a Bhagavad Gita, maybe they have their own commentary on the Bhagavad Gita. But Srila Prabhupada didn't just simply have Bhagavad Gita, he had also Krishna book. तो कई सारे प्रचारक ऐसे थे जो गए हैं अमेरिका में और उन्होंने अपना भगवत गीता पे अपना लिखा है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी गए, उन्होंने केवल भगवत गीता नहीं, श्रीला प्रभुपाद जी के पास कृष्णा बुक भी प्रभुपाद जी ने। And it was Srila Prabhupada who introduced deity worship to the Western world. Also, he brought the deities of Radha and Krishna there and established them in temple. तो श्रीला प्रभुपाद जी हैं वो जिन्होंने पाश्चात्य जगत में पहली बार श्री विग्रह की सेवा को स्थापित किया और राधा कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा को शुरुआत किया। And so today we're honoring this very special day, the day in which Srila Prabhupada actually landed there in USA, and we're so much grateful for his journey, for all the trials and difficulties which he underwent. We have so much to thank Srila Prabhupada for. तो आज का एक दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज के दिन श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में पहली बार पहुंचे और इतना ज़्यादा मुश्किलें, इतना दिक्कतों को सहते हुए प्रभुपाद जी ने हमें ये दिया। तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञता हम महसूस कर रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें ये सब दिया, इसके लिए प्रभुपाद जी का बहुत धन्यवाद। He didn't just think only of America, but he thought of the whole world. श्रीला प्रभुपाद जी ने केवल अमेरिका के लिए नहीं सोचा, श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर के बारे में सोचा। And of course he also thought of his native land, India, that he wanted. He spent a lot of his time here in India. और श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना जन्म घर भारत के बारे में भी सोचा और यहाँ पे काफी समय दिया प्रभुपाद जी ने। Just developing and establishing, getting the basis of the foundation for this Krishna consciousness movement. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने भारत में काफी समय दिया यहाँ पर कृष्ण भावना में को स्थापित करने के लिए, ऐसे सेंटर्स बनाने के लिए। I was here in Delhi in 1975. I remember Srila Prabhupada coming to Delhi. At that time we were in Bengali market. We had a small rented house. तो 1975 में मैं दिल्ली में था और वहाँ पे उस समय श्रीला प्रभुपाद जी आए थे। बंगाली मार्केट में एक छोटे से किराए के मकान में हमारा सेंटर था। And we were about 4 or 5 devotees. और हम 4-5 भक्त थे बस। And we were also worshipping Radha Sarati. और हम लोग श्री राधा पार्थ का अर्चन करते थे। It was very pioneering days for the Krishna consciousness movement. वो कृष्ण भावना संस्था के लिए बड़ा विशेष दिन थे। There were no books. Books had not yet begun, hadn't been printed yet in India. उस समय कोई किताबें नहीं था, उस समय तक भारत में किताबें छपना शुरू नहीं हुआ था। But somehow we were preaching and we were trying to enroll life members. तो उस समय हम थोड़ा प्रचार करने का कोशिश करते थे और लाइफ मेंबर्स बनाते थे। And of course there was opposition. One of the big obstacles to Krishna consciousness was that the devotees of the Krishna consciousness movement are all, they're either drug addicts, they're hippies from the drug era, and they're drug addicts because Devanand had made one film called Hare Krishna, Hare Ram. And so wherever devotees went, people would sing the song, Hare Krishna, Hare Ram, Dum Ba Dum. And like this, they thought of the devotees as just coming from the hippies. तो उस समय काफी कठिनाई भी होता था क्योंकि सारे लोग सोचते थे कि ये जो हरे कृष्णा के भक्त हैं या तो ड्रग्स वाले हैं या हिप्पीज हैं। और उस समय वो एक मूवी भी आया था दम मारो दम, तो वो जहाँ पे भी भक्तों को देखते थे वो बोलते थे हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम। And some people may have come from the hippie era, but actually the majority of the devotees, they were genuine seekers of the truth. They were really looking for something.
तो कुछ लोग जरूर हिप्पी बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन ज्यादातर अधिकांश सभी लोग वो जुड़े थे इस संस्था में जो कि सत्य की खोज में बहुत गंभीरता से लगे थे। And so at that time we were new to India, so people were not joining the Krishna consciousness movement. तो उस समय भारत में नए थे और लोग ऐसे भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे। On the other side, some people thought we were the CIA. We were agents from the American government who were infiltrating India because there was some tension between USA and India. So people thought that these Hare Krishnas are CIA agents and they're just here to do some harm to the Indian government. और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग CIA अमेरिकन एजेंसी के लोग हैं जो कि भारत में जासूसों की तरह रह रहे हैं और इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको लगता था कि हम अमेरिकन जासूस हैं यहाँ पर। And of course, even Vrindavan was called the Angrezi Mandir. हमारा जो वृंदावन का भी मंदिर था उसको अंग्रेज मंदिर बोला जाता था। Nowadays, of course, these things are not there, and everything has changed for the better. तो अब आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ अच्छा हो गया, काफी बदल गया है। But it took time, and Prabhupada had to tolerate all of these things. लेकिन इसमें काफी समय लगा और श्रीला प्रभुपाद जी को ये सब कुछ सहन करना पड़ा। But he never gave up, and he would whenever he would go to Vrindavan, he must come to Delhi, and he would come to our little center in Bengali market. लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी पीछे नहीं हटे, श्रीला प्रभुपाद जी लगे रहे। श्रीला प्रभुपाद जी जब भी वृंदावन आते थे तो हमारे छोटे से बंगाली मार्केट में जो सेंटर था वहाँ पे भी जरूर आते थे। And I remember Prabhupada, he met the one life member. He asked the member, "What business do you do?" The man said, "I have a transport company." And Prabhupada said, "Oh, you have a transport company? Then you could arrange my transport to go to Vrindavan, can you?" And the man, "Oh yes, yes, no problem." And so we saw Prabhupada engage people in this service. तो महाराज याद करें कि एक बार श्रीला प्रभुपाद जी एक लाइव मेंबर से मिले, श्रीला प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो क्या आप मेरा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर देंगे यहाँ से वृंदावन? तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर उसने बोला हाँ। तो इस तरह श्रीला प्रभुपाद जी सबको सेवा में लगाते थे। So Prabhupada also said he wanted temples in every village in Delhi. There are 22 villages in Delhi, so you should have a temple in every village. तो श्रीला प्रभुपाद जी ये भी चाहते थे कि दिल्ली में 22 गांव हैं, प्रभुपाद जी चाहते थे सभी 22 गांव में मंदिर हो। So we see Gopal Krishna Goswami Maharaj working very wonderfully to fulfill all of Srila Prabhupada's desires. तो हम देख सकते हैं कि His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी के सारे सपनों को साकार करने के लिए। Okay, thank you very much. Are there any questions? किसी का कोई प्रश्न है? Yes. Maharaj, any past times with you? वैसे ऐसे कुछ हिंदी में पूरी Maharaj, any past times with Prabhupada? Your personal past time. तो बस पूछ रहे हैं कि महाराज आपका प्रभुपाद जी के साथ कोई ऐसा लीला? No, I can't think of any. Prabhupada would come to Delhi, and we would stay in the center. Well, stay in we would move the ladies out of the place where they were staying, and Prabhupada would stay there, and the ladies would have to find some other place to stay. And Prabhupada just wanted to see how we were doing, what's going on, how we're maintaining. He wanted to encourage us to keep going. तो महाराज बता रहे कि इतना ही है कि श्रीला प्रभुपाद जी हमारे यहाँ पे आते थे बंगाली मार्केट में, और जब वो प्रभुपाद जी आते थे तो जो माता जी जिस जगह में रहती थी कमरे में, उसको कहीं और उसमें जाना पड़ता था और प्रभुपाद जी वहाँ पे आके रुकते थे। और प्रभुपाद जी यही देखते थे कि हम लोग ठीक ठाक हैं, हम लोग अच्छे से कैसे यहाँ मैनेज कर रहे हैं, कैसे चल रहा है सब काम, ऐसा देखते थे। I was a very young devotee, and Prabhupada was very old.
70s, and the whole life in Krishna consciousness. I'm very new to Krishna consciousness, so I didn't really get close to Prabhupada. I just tried to hear Prabhupada's lectures and tried to hear and tried to be a submissive devotee. तो महाराज बता रहे कि मैं बहुत ही नया भक्त था, बहुत छोटा भी था, और प्रभुपाद जी बहुत उम्र में भी बड़े थे, और वैसे भक्ति में भी पूरी उम्र उनका भक्ति में जीवन था। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा प्रभुपाद जी से कुछ बात नहीं होता था, लेकिन मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता था और एक विनम्र भक्त बन के रहने का प्रयास करता था। Thank you so much for an enlightening lecture. My question, Maharaj, as you mentioned in the lecture, struggle of Srila Prabhupada for the preaching period. So still we are seeing somewhere we are doing some preaching, so different kind of challenges. Some people are very rigid, very connected with Mayavad philosophies. So how can we develop that kind of determination towards doing spread of Krishna consciousness? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी को किस प्रकार के अलग-अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस प्रचार के संस्था को खड़ा करने के लिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि आज भी जब हम प्रचार करते हैं तो हमें भी कई तरह की कठिनाई सामने आती है। कई बार कई लोग बहुत ढीठ होते हैं, कई बार कुछ मायावादी लोग मिलते हैं, तो ये कठिनाइयाँ हमारे पास भी आता है। तो इन कठिनाइयों के चलते हम कैसे दृढ़ रहें अपने प्रचार कार्य में, महाराज जी कृपा करके बताएं। Well, we can see the success of the Krishna consciousness movement, and that should give you more faith in Krishna consciousness. तो महाराज कह रहे हैं कि हम इस संस्था की सफलता को देख सकते हैं, और इस संस्था की सफलता को देखते हुए हमें ज्यादा विश्वास हो सकता है कृष्ण भावना में। How Krishna consciousness is spreading not only in India, but it's also spreading in other countries. We have so many Russian devotees, we have so many African and Chinese devotees, we have people from everywhere. तो ये कृष्ण भावना में संजय केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में ये फैल रहा है। बहुत सारे सुंदर रशिया में भक्त हैं, अमेरिका में भक्त हैं, और पूरे विश्व भर में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। And here in India also it's a wonderful success story. और यहाँ भारत में भी बहुत ही विशेष सफल कथा है। There's so many wonderful temples and huge numbers of devotees. यहाँ पे इतने सारे सुंदर मंदिर, इतने बड़ी संख्या में भक्त, wonderful festivals, wonderful programs taking place everywhere. बहुत सारे सुंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं सब जगह। It's such a transformation to how things were in the beginning. In the beginning, it's certainly very difficult, but Prabhupada understood that in the future, gradually it will happen. More and more people will take up Krishna consciousness. तो अभी हम देख रहे हैं कि पहले के अपेक्षा में बहुत सुंदर हो गया चीजें, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उस समय बहुत कष्ट था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस समय देख सकते थे कि धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में प्रचार का जो मौका है और ज्यादा मिले। There are other groups, there are other philosophies. Yes, we know there's so many different philosophies. There's other Vaishnavas, Sampradayas, and so on. But I don't think any of them are as successful as ISKCON, at least in India. वैसे कई सारे संस्था हैं, कई सारे उनके सिद्धांत हैं, ऐसे कई सारा कार्य हो रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इतना सफल कोई नहीं हुआ जितना ISKCON संस्था है, खासतौर से भारत में। So we should have faith. तो हमें विश्वास होना चाहिए। Maharaj, my question is, what was the secret of Prabhupada's determination? He was a great devotee, he was tolerant a lot. So what was the secret of that? Was he God gifted or he had developed that out of devotional services? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो दृढ़ संकल्प था, उसके पीछे क्या रहस्य है? क्या वो स्वाभाविक रूप से ही वैसे थे, या फिर भक्ति की शक्ति द्वारा उन्होंने ऐसा
Well, he did get a lot of signs from Krishna and from other means, different visions and dreams, different things which happened to him, which encouraged him. For example, when he was staying at Radha Damodar, where his own quarters were, in Radha Damodar temple, it said at one point Rupa Goswami actually appeared there to him and told him, you just go to America and write your books, I will take care of everything. तो महाराज बता रहे कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा कई सारा चीजें हुआ, उनका भगवान से संबंध, भगवान से वार्तालाप और ऐसे कई और महान व्यक्तित्व ने उनको दर्शन दिया, जैसे कि जब वो राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में रहते थे तो उस समय श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद जी को दर्शन दिया. So those kind of visions, those kind of things which happened, they helped to confirm Prabhupada's determination, given that determination to continue to go on. तो ऐसा सब जब हुआ, जब ऐसे विजन, ऐसी चीजें, तो वो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के जो दृढ़ निश्चय था उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया. श्रील प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि वो कर रहे थे. Prabhupada had his own determination in writing. He never gave up his writing, and that was going on right till his very last breath. He was dictating his purports of Srimad Bhagavatam. तो श्रील प्रभुपाद जी का अपना भी दृढ़ संकल्प था, और वो हम देख सकते हैं उनके किताबों लिखने में भी. श्रील प्रभुपाद जी लगातार किताबें लिखते रहे, अपने आखिरी श्वास तक भी श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के purport लिखते रहे. And he used to take pleasure in hearing his own books, and he would often say, I have not written these books, so Krishna has spoken them through me. और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आता था अपनी ही किताबें सुनने में. और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने ये किताबें नहीं लिखी, ये कृष्ण के द्वारा लिखी गई. And so in this way, Srila Prabhupada was greatly determined to really go all out to try to give everything for this Krishna consciousness movement. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा दृढ़ उनका संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, कुछ भी प्रभुपाद जी करने के लिए तैयार थे इस संस्था को आगे बढ़ाने. Getting all those books printed, so many books, and Prabhupada really pushed the devotees to do things. ये सारी किताबों को छापना, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों को काफी उनको मतलब आगे बढ़ाया इसकी सेवा करने के लिए, काफी बोला. When I was staying in India, I was in Calcutta for some time. I was staying in the Calcutta temple. I used to do life membership there. And I remember one time I picked up the phone, it was ringing, and it was Prabhupada's son on the other line. It was his youngest son, Vrindavan. Somehow he called the temple, and he just wanted to talk to a devotee. So he happened to talk to me. तो महाराज बता रहे कि मैं जब कलकत्ता में सेवा कर रहा था, तो एक बार मैं कलकत्ता मंदिर में रहता था, तो एक बार एक फोन आया और मैंने उस फोन को उठाया. और जब फोन को उठाया तो पता चला कि उस तरफ से श्रील प्रभुपाद जी के सबसे छोटे पुत्र वृंदावन, वो उन्होंने फोन किया था मंदिर में, और मंदिर में भक्त से बात करना चाह रहे. So his son, in the course of our conversation, his son, he said to me, he said, you don't know how strict my father used to be. तो उनके वृंदावन जी ने महाराज को बताया कि आपको नहीं पता मेरे पिताजी कितने कड़े थे. But actually I did know, because I knew Prabhupada was strict. He was strict with us also. He didn't joke around. He was very serious. He was always quite strict with us. तो महाराज कह रहे लेकिन मैं वास्तव में जानता था कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि हमारे साथ भी प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे. ऐसे नहीं कि मजाक करते रहते थे, प्रभुपाद जी बहुत गंभीर रहते थे. So Prabhupada had that strictness as a father, and he kept that strictness as a spiritual father. तो श्रील प्रभुपाद जी पिता के रूप में अपने बच्चों से भी काफी स्ट्रिक्ट थे, और बड़े और फिर गुरु और के रूप में भी हमसे भी बहुत स्ट्रिक्ट. This Krishna consciousness movement is not for lazy people, and it's not for crazy people. तो ये जो कृष्ण भगवान है, ये आलसी और मूर्ख व्यक्तियों के लिए नहीं है.
and at the same time you're not paying anybody, everybody's coming, working voluntary, no salaries. और इसके साथ साथ हम किसी को यहाँ कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, सब कोई अपनी इच्छा से आके यहाँ पे सेवा कर रहा है। Sometimes Prabhupada was walking, one morning Prabhupada we got news that Prabhupada's quite angry, he's quite upset this morning, he didn't like things and he was finding fault and he was pointing out so many things wrong. And he was walking around the temple and he met this one boy, this one American man, maybe you remember him. He left the body about a year ago. His name was Visal. And he left the body in Krishna Balaram Mandir. Anyway, he was a very older person, disciple of Srila Prabhupada, and he was there in Vrindavan at this time, this morning, when Prabhupada was in quite an angry mood, And so Prabhupada was walking around the Vrindavan temple and he's pointing out, this is wrong, you have to change that, it shouldn't be like that. And then he came past Visal, and Visal said, Jai Prabhupada! And Prabhupada looked at him and said, you do something useful also. एक दिन एक सुबह को सब बड़े चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में थे और प्रभुपाद जी काफी गंभीर थे और वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद जी उसका दौरा कर रहे थे और वृंदावन मंदिर में जहाँ भी जाते थे बोलते थे ये सही नहीं है, इसको ठीक करो, ये सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है। तो सब भक्त जान रहे थे कि प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित थे। और फिर एक भक्त विशाल, तो महाराज बता रहे कि उन्होंने अभी 1 साल पहले वृंदावन में शायद शरीर छोड़ा कृष्ण बलराम मंदिर में, काफी पुराने भक्त थे, तो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल। तो जब वो आए श्रील प्रभुपाद जी के सामने, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के सामने आते ही बोला, जय श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला, आप भी कुछ कार्य करो। Okay, any other question? Yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna, thank you so much, and I'd like to especially thank you for adjusting your schedule on such short notice. So you made all the changes to come to Rohini in your schedule, so thank you very much for that, and for this wonderful lecture from so many customers. So my question is, Maharaj, I'd like to mention how Srila Prabhupada has traveled without any money, without any man and support, and we see how the same spirit is carried by the disciples of Srila Prabhupada, all of you, like father, like son. So I want to know what thing we can develop in ourselves to have the same spirit of spreading the mission. Although at present we have all the facilities, the money, the man, the resources, the book, the devotees, but still that something is missing. We are not able to really do. So if you can help us and what we can develop so that we can also become an instrument in spreading the mission. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आपने बहुत सुंदर बताया कैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनके पास ना तो धन था, ना कोई उनको सहयोग करने वाला था, और हम देखते हैं कि जैसा पिता वैसे पुत्र, आप सब लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ऐसा ही किया, बिना किसी ज्यादा सुविधा के, बिना धन के आपने इस कृष्ण महामंत्र को बहुत उत्साह से प्रचार किया। लेकिन महाराज हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा दृढ़ संकल्प और उत्साह है। अभी हमारे पास धन भी है, सब सुविधाएं भी हैं, लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ कमी है और वो हमारे अंदर वैसा उत्साह नहीं है महाराज, तो क्या कर सकते हैं? Well, we have to preach everywhere according to time and place and circumstances. So now in India, of course, the times are quite different from how it was when Prabhupada came to establish Krishna consciousness. तो महाराज बता रहे कि प्रचार का कार्य जो है हर समय काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। तो अभी का जो समय है और प्रचार का जो जरूरत है वो पहले से काफी अलग है। Yeah, Prabhupada, as you said, as we said, Prabhupada had no money and no books or anything, but still somehow we began the preaching. But when we have these things, we can utilize them more and we can go on and do even bigger preaching. तो जैसे मैंने बताया कि उस समय श्रील प्रभुपाद जी के पास किताबें नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने किसी भी तरह से इसको प्रचार को बढ़ाया। लेकिन अभी जब हमारे पास ये सब चीजें हैं
तो हमें इन सब चीजों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और प्रचार कार्य को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। There's still a lot of preaching can be done. It's not that everything is already done and all the temples are already built. There's so many things more to be done. तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी काफी कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं है कि सारा प्रचार हो ही चुका, सारे मंदिर बन ही चुके, अभी काफी कुछ कार्य और बाकी है। Prabhupada wanted set of Srimad Bhagavatams in every home. श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे श्रीमद् भागवतम का सेट हर एक घर में हो। And Prabhupada wanted high court judges all to have tilak. और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हाई कोर्ट के जज सारे तिलक लगाकर बैठे। And everybody in parliament, everybody in the government, they should all be twice initiated brahmanas. और प्रभुपाद चाहते थे कि पार्लियामेंट में सब कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त हो। Not just jati brahmins, but actual brahmins who strictly follow the regulated principles. केवल जाति ब्राह्मण नहीं, अपितु असली ब्राह्मण जो सभी नियमों का पालन करते हैं। So we're only doing the foundation work now. We're just getting the foundation built nicely. तो अभी तो केवल हम नींव रखने का कार्य कर रहे हैं, अभी केवल एक नींव को अच्छे से रखने की कोशिश कर रहे हैं। But there's so much more to be done. लेकिन बहुत कुछ अभी और कार्य करना बाकी है। And so we have to be ambitious. We have to have that fire, just as Srila Prabhupada had that ambition. Prabhupada talked about chasing rhinos, right? तो महाराज कह रहे कि हमारे अंदर वो अग्नि होना चाहिए, हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कैसे गैंडे का शिकार करने के लिए। Don't think small. Don't go hunting rabbits. छोटा मत सोचिए, खरगोश का शिकार मत कीजिए। Chase the rhino. गैंडे का शिकार कीजिए। I was telling one devotee that I go to Russia and I preach in Russia, and I go to the far eastern side of Russia. I said it's after Siberia. From Moscow, you keep going to Siberia, then keep going, and then after that. So I'm over in that region of Russia. तो महाराज कह रहे कि मैं एक भक्त को बता रहा था कि मैं फार ईस्ट रशिया में प्रचार करता हूँ और ये जो क्षेत्र है ये बहुत दूर है, साइबेरिया से भी और आगे जाके वो स्थान है। So I was telling this one devotee, and he said, "Well," I said, "I went to Russia." He said, "I went to the other side of Russia." He said, "I just looked at that. I went there one time. I never went again." तो महाराज कह रहे कि एक और मैं भक्त से मिला, उन्होंने बताया कि वो रशिया के दूसरे छोर पे गए थे और एक बार वो वहाँ पे गए, उसके बाद वो दोबारा नहीं गए। So that's not the mode, You're going to go someplace. You have to be willing to, like Prabhupada went to America. He did something. He established something. तो महाराज कह रहे ये मूड नहीं होना चाहिए, जब आप किसी स्थान पे गए तो फिर वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ पे कुछ किया, बहुत कुछ स्थापित किया। It takes some time, of course. It doesn't all happen overnight. You have to be patient, and you have to be really willing to hold on and to stick it out there. तो इसमें काफी समय लग सकता है, आपको धैर्य भी रखना होगा, प्रयास लगातार करते रहना होगा, इसमें समय लगेगा। And gradually, one day, things will develop. और एक दिन चीजें जो है उस स्तर पर पहुंच जाएगा। But even if they don't develop, just the fact that you stayed there, it's a credit, and you stuck it out, and you're trying to do something. और अगर ऐसा नहीं भी हो पाया, अगर इतना अच्छे से चीजें विकसित नहीं भी हो पाया, लेकिन आपको उसका श्रेय मिलेगा क्योंकि आपने वहाँ पे रहे और अपना पूरा प्रयास किया उसको शुरुआत करने के लिए। So Srila Prabhupada used to tell us, he'd say, you go somewhere, he said, you get the credit, you try to do something. But if you don't go, in the future somebody else will go, they will get the credit. तो श्रीला प्रभुपाद जी हमें ऐसा बोला करते थे कि आप जाइए, आप जाके प्रचार कीजिए, आप करेंगे तो आपको उसका श्रेय मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो भविष्य में कोई ना कोई और जाके जरूर करेगा। So why let somebody else get the credit? Better you go yourself and try to do something. तो दूसरे को क्यों श्रेय मिलना चाहिए, आप ही जाके कुछ करिए ना। So like that, we have to
be willing, you have to be a little bit adventurous, you have to be willing to take some risks. तो हमें इसके लिए इच्छुक होना होगा, हमें कुछ ना कुछ रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना होगा, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। Risks are everywhere. Wherever you go, there's danger, right? Padam padam tadvipadam natesham. There's danger in every step, but if we just depend on Krishna. तो खतरा तो हर जगह है, हर एक कदम पे खतरा है, जहाँ पे भी आप कुछ भी करेंगे उसमें खतरा है। तो लेकिन हम भगवान पर आश्रित होना सीखते हैं। Srila Prabhupada told the devotee who was in charge in Delhi in 1975, he said, you should always think Krishna has some plan for you. तो जो 1975 में जो भक्त यहाँ के इंचार्ज थे, श्रील प्रभुपाद जी उनको बोले थे कि आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान ने आपके लिए कोई प्लान रखा है। So we should all think like that, all of us, that Krishna has some plan for us. तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए कोई योजना रखा है। And just be an instrument in that plan. और आप उस योजना को सफल बनाने के लिए निमित्त मात्र होकर सेवा करें। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.